Hey, what's up guys, this is Ricky and welcome back to another video, and today is going to be the first unboxing on this channel, so I'm really excited. So इस channel की सबसे पहली unboxing के लिए I want to unbox the GK61 keyboard, the best budget 60% keyboard. So guys, here is the GK61 box which we'll unbox just in a minute. So here we get the keyboard itself, the GK61 keyboard. And this is the paperwork that we get, जो हम कभी नहीं देखते हैं. So under this we have the USB A to C type cable. Here we get the plastic keycap puller जिससे हम keys निकाल सकते हैं. Here is the switch puller जिससे हम switches pull कर सकते हैं. This tells us that the keyboard is a hot swappable keyboard. So now let's unwrap this keyboard. So I finally got this keyboard after like a month because of this corona situation going on. और काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ा ऑनेस्टली एंड काफ़ी ज़्यादा मेल्स लिखनी पड़ी थी. द मेन इशू वॉज ड्यू टू द लॉजिस्टिक कंपनी, बट मैकीज प्रोवाइडेड अ प्रिटी स्मूथ सपोर्ट. एंड जब भी मैंने मेल किया मैकीज को, ऑलवेज दे ट्राइड टू रिप्लाई इन अ पॉजिटिव वे and they tried their best that I can get my product as soon as possible in this situation. So if you want this mechanical keyboard for yourself, and there are many other premium mechanical keyboards present on their site, so I'll provide a link below and you can check the keyboards out. So here we have the keyboard in all its 60% glory, and trust me, this form factor is such an adorable form factor. I really like its form factor. मुझे छोटे keyboards का शुरू से शौक था and I wanted to get one as soon as possible, and finally I thought like we can't get anything else during this lockdown, so why not get myself a keyboard. So now let's talk about the build quality of this keyboard. This keyboard is built fully in plastic and comes at around 550 grams. Even though ये plastic का बना है, it has a pretty sturdy quality and कोई flex नहीं है, कोई bends नहीं आते हैं इसमें. Personally, I would like to say that this keyboard is a pretty well-built keyboard for a price of 3,700 rupees. I've also tried the Ducky 1-2 Mini keyboard, that is also a 60% keyboard, जिसका price is around 8,500 rupees. And even though it has a more premium build, but in that price you can get two of these keyboards and still have money left. But one major difference is that the Ducky 1-2 Mini keyboard comes with Cherry MX switches, and इस keyboard में हमें Gateron switches देखने को मिल जाती हैं. And we had three options on the site, that is the blue switches, the red switches and the brown switches. Now the Cherry MX switches वो ज़्यादा premium consider करी जाती हैं, but I guess for any Indian budget gamer this is the keyboard जो वो prefer करेंगे, because this is literally half the price as Gateron switches, optical switches. So talking about the switches, I got the keyboard with brown switches because red are completely linear and are preferred by the gamers, but still have no tactile bump. But these brown switches are tactile switches that provide a tactile bump and also feel quite linear and require just a little more actuation force than the linear red switches. And the blue switches are for the people who love typing and are only going to type with it, so that requires the largest actuation force and उसकी sound भी इन सबसे ज़्यादा होगी. Red switches की जो sound होगी would be the least, and brown switches have somewhere medium. So basically brown switches are a combination of blue and red switches, and मैंने कोई professional gaming नहीं करनी है इतनी, so I really love the tactile bump feel in this keyboard. Also this keyboard has a standard 60% layout for the keys, so if you want to replace the keycap someday, it is a really easy process. So the GK61 keyboard comes in two variants, that is the standard hot swappable keyboard and also the optical switches hot swappable keyboard. The difference between the two being that जो normal वाला keyboard होगा उसमें हम सारे तरह के switches swap कर सकते हैं, the Cherry MX style switches and also the other switches that are provided on the net. But Mackeys only provides the optical switch type keyboard, and this means that इसमें हम सिर्फ optical key switches switch कर सकते हैं. But I don't think that really makes a big difference for plenty of the gamers in India, and hence this keyboard provides complete customizability and you can completely switch your switches or the keycaps whichever you want.
ऑल्सो हमें टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है बॉक्स में, जिसके थ्रू हम अपने कीबोर्ड को अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्टली ऑल प्रीमियम मैकेनिकल कीबोर्ड्स गेट दिस टाइप सी केबल सेपरेटली एंड दैट जस्ट एड्स टू द प्रीमियम फील। एंड नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ इस कीबोर्ड की RGB लाइट्स के बारे में, एंड आई एम कम्प्लीटली इन लव विद देम। मतलब मैं इस कीबोर्ड को सारा दिन ऑन रखता हूँ अपने डेस्क पे बिकॉज इट हैज सच अ सैटिस्फाइंग फीलिंग एंड वी ऑलरेडी गेट सो मेनी RGB पैटर्न्स इन द कीबोर्ड। बट तब भी अगर आपका मन ना भरे और रंगों से और खेलने का मन करे तो हम कंप्लीटली इन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं थ्रू द सॉफ्टवेयर। नाउ द सॉफ्टवेयर इज नॉट प्रोवाइडेड मैकीज की साइट पर, वी हैव टू गूगल इट सेपरेटली। आई विल प्रोवाइड द लिंक बिलो इफ यू वांट इट। दिस लास्ट पैटर्न वर्क्स विद द माइक्रोफोन इन दिस कीबोर्ड। दिस माइक्रोफोन इज प्रेजेंट अंडर द स्पेस बार ऑफ दिस कीबोर्ड एंड हम इसको देख भी सकते हैं अगर हम इसका स्पेस बार उतार के देखें। एंड इस माइक्रोफोन के थ्रू ये कीबोर्ड साउंड पिक करता है एंड उसके अकॉर्डिंग इट विल चेंज द लाइटिंग। So according to me that is a pretty dope thing. I got the black GK61 keyboard but you can also get a white keyboard and उस पर भी जो RGB lighting है वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। So last I would like to talk about the sound of the keys of this keyboard and that is something जो काफी gamers consider करते हैं before buying any keyboard. So according to me the sounds of this keyboard completely give you an ASMR feel and it sounds like a very premium quality mechanical keyboard. I have heard many keyboards in many videos on YouTube but trust me ये keyboard की जो sound है for me is really good and really satisfying. So now this is a 60% कीबोर्ड, हमें इसमें सारी कीज नहीं देखने को मिलती हैं। So काफी ज्यादा जो राइट साइड की कीज हैं on normal keyboards are present with the function key on this keyboard and you can access them using the function key. Also जो arrow keys हैं can be used only with the function keys. You can map them separately but then you will lose the functionality of some other keys. So इससे पहले मैं एक बहुत ही नॉर्मल कीबोर्ड यूज करता था एंड यूज्ड टू गेम यूजिंग दैट ओनली, बट जब से ये आया माय गेमिंग एक्सपीरियंस कंप्लीटली चेंज्ड एंड आल्सो आई हैव पुट दिस कीबोर्ड टू यूज प्लेइंग प्लेनी गेम्स एंड अब मैं कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ वेयर आई पुट दिस कीबोर्ड टू यूज एंड पुट दिस अंडर टेस्ट एंड हाउ इट रियली फेल्ट प्लेइंग द गेम्स। So I'm using this keyboard to play Fortnite, जो मेरे हिसाब से अभी के लिए सबसे ज़्यादा एडवांस मैकेनिकल गेम है। I don't think any other game requires as many key presses as this game and it's such a fast game and इतने ज़्यादा keys press करने पड़ते हैं ना that the fingers used to hurt before but now the experience is completely breezy. So in a nutshell I completely love this keyboard for this price at least. इस प्राइस में हमें I don't think और कोई इतना अच्छा मैकेनिकल कीबोर्ड with brown switches देखने को मिलेगा। Cherry MX keys वाले keyboards will start from around 5,000 rupees and जो ये कीबोर्ड है just gives the proper feels for a mechanical keyboard and I don't think किसी कैजुअल गेमर को या एंट्री लेवल गेमर को भी इससे ज़्यादा बेटर कीबोर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। सो आई वुड लाइक टू स्ट्रांगली सजेस्ट दिस कीबोर्ड टू अदर गेमर्स आउट देयर एंड ऑल्सो जिन लोगों को टाइपिंग करते हुए फन लेना है। So this keyboard is purely for them. So you guys let me know in the comment section below what do you think about this keyboard and do you really feel that mechanical keyboard is what you need next? But just like that, this is it from my side and I hope you liked the video and if you did, please be sure to smash that like button and also hit the subscribe button if you haven't already and I'll see you in the next one.